Jain, everybody. A very good morning to you all and warm greetings from Swami Vivekanand Subharti University to one and all. Honorable Chief Guest, Dr. Professor Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian University. Guest of Honor, Dr. Professor Neharika Vohra, Honorable Vice-Chancellor, Delhi Skill and Entrepreneur University. Dr. Professor Snigdha Patnaik, Pro-Vice-Chancellor, Delhi Skill and Entrepreneur University, the galaxy of eminent women achievers, along with our guiding light, the Honorable Chancellor of Swami Vivekanand Subharti University, Mrs. Stuti Narayan Kakkar, the Chief Executive Officer, Dr. Salya Raj, the Deans and Principals of colleges, faculty, and my dear students. I extend a very warm welcome to you all on the eve of International Women's Day celebration. That is actually on 8th March, tomorrow. We are here to commemorate a remarkable day by recognizing and applauding the achievements secured by the women across different spheres of life, from administration, academic, social, cultural, to personal. It is also an occasion to celebrate the progress made towards achieving gender equality and women empowerment, and reflect on those accomplishments and strive for a greater momentum towards gender equality worldwide. It was in 1975 when the United Nations recognized International Women's Day, and from 1996 onwards, International Women's Day became a theme to celebrate women in society. This day, the world acknowledges and honors many women achievers who braved rough weathers and managed to achieve great milestones. Gender equality is one of 17 goals that make up the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. An integrated approach is crucial for progress across the multiple goals. The UN Sustainable Achievement Goals number 5 aim to build on achievement to ensure that there is an end to discrimination against women and girls everywhere. Higher education institutions like ours have an essential role in sustainability. They are key agents in the education of future leaders that they will contribute to the successful United Nations Sustainable Development Goals implementation. I am glad to say that Swami Vivekanand Subharti University has taken many initiatives to implement the UN Sustainable Development Goal, and as a result of which our achievements are many. To enumerate few in the context of goal number 5, the first is our university is highly successful in attracting women students to a wide range of programs across the institutions. Faculty of Medicine established a chair in the name of founder Sanghamata Dr. Mutti Bhatnagar Foundation, which is working on the theme such as gender and health equality, holistic health, and prevention of gender biased against based violence prevention. University is headed by a women chancellor and has women chief executive officer, the women director of distance education, women controller of examination, women director IQAC, and various committees are headed by women. University has Swami Vivekanand Chair, the convener of the chair itself a woman,
who has taken up many initiatives to spread the message of Swami Vivekananda regarding gender equality and progress of the nation. This year's International Women's Day theme is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, a recognition that gender bias still exists in society, workplace, and even subconsciously in many minds. It is a call to strive for a world free from biased stereotypes and discrimination, a world that is diverse, equitable, and inclusive. Across the world, we are seeing women paving the way in male dominated industries by forging their own paths rather than being discouraged by the lack of female role models they have, applying for jobs even when they don't meet 100% of the criteria. Standing on this day, we salute every woman who is lighting for justice, who is fighting for justice and equality, and striving hard to make this world a better place by breaking the bias and opening new vistas of growth and development. Thank you. Thank you very much. I once again welcome you all to this celebration. Jai Hind. Thank you so very much, sir, for those motivating words and for letting our distinguished guests also know as to how many posts and positions in the university are being donned by females. And this very much in itself is a testimony to the fact that we at Subharti University are given to women's equality, to women's parity. And we do everything. Our Chancellor, Madam, Mrs. Stuti Narayan Kakkar, and our CEO, Madam, they have envisioned a society through the university operations that we all, whatever we can, whatever possibility we can, are created for the students and the faculty and the staff every now and then, and they see to it that the environment is completely safe and secure for the prosperity, for the growth, for the immense possibilities to be created by the women who are working here and feel very, very safe in the environment that is given and bestowed to us by you. I personally thank you, Chancellor Madam and CEO Madam, because I feel very privileged and proud to be a system that respects the women and the self-esteem and the self-worth that every woman brings to the table. Thank you. As the guest of honor, we have amongst us today, as I have already shared with you, Dr. Neharika Vohra. I would like to introduce you all to the guest of honor. Dr. Neharika Vohra has been appointed first Vice-Chancellor of Delhi Skills and Entrepreneurship University. She has been a professor at Indian Institute of Management, Ahmedabad, for the last 2 decades. She was also heading IMA's Center for Innovation, Incubation, and Entrepreneurship as its chairperson, which was set up in association with the Government of India and the Gujarat government to fund and promote the startup ecosystem in the country. She has been a visiting professor in the University of Manitoba, Winnipeg, Canada, and taught at the Xavier Institute of Management, Bhubaneswar. Currently, she is the Associate Editor of Indian Psychological Abstracts and Reviews and Book Review Editor of International Journal of Cross-Cultural Management. Dr. Vohra has coordinated various training programs for small-scale industries located in Orissa. In the collaboration with Small Industries Development Bank of India, she has been involved in training of executives of various national and multinational corporations. May I very kindly invite Madam to please come up on stage and give us the honor and an opportunity to recognize. And alongside, I would also request Chancellor Madam, CEO Madam, Honorable Vice-Chancellor,
to please come on stage, escorted by the convener of the event, Dr. Ghai. I would request you all to please be up on stage, as we would very much like to felicitate our guest of honor. Dr. Neharika Vohra. Yeah, can we have some lights on the stage, please? Let there be light all around. There's no place for darkness now. Let a new dawn begin, please. Thank you so much. I would request our Honorable Chancellor, Madam, and CEO, Madam, to please drape Angvastram as a mark of respect on our guest of honor, Dr. Neharika Vohra, today. And thank you so much. And I would request Honorable Vice-Chancellor to please present citation to our guest of honor. Thank you so much. What an honor, madam. Thank you so much for being here. May I request you, Dr. Vohra, to please speak a few words? A very, very warm good morning to all of you. It fills my heart to see a lot of students sitting there, a lot of the faculty, and a lot of very, very honored guests in the audience. I can also see that the group has good mix of men and women. There seem to be more women students, so I'm going to talk a little bit more to the women. But it is always nice to have a Women's Day celebration where not only the women are invited, as if it's only their business. Of course, as has been pointed out, we will all look forward to a day when we don't have a Women's Day, when it's not necessary to have a Women's Day. But until that time, I think the only way we can get there is if both men and women come together to actually think about how come a population which is about 50%, just the way it is, has to have one day of the year. So in that context, I will say that many times when I meet colleagues, I meet students, I meet people, they ask me, are you a feminist? And, as if kuch galat hai. And so I ask, aren't you? And they will say, and there are many answers, right? No, or yeah, a little bit, or ye pseudo-feminist hame nahi achhe lagte. All these things get told, yeah? So my question to each one of them is, feminism simply says that equality, that everybody should have an opportunity which is not based on जेंडर, राइट? अगर आप उसको नहीं सपोर्ट करते, अगर आप ये कहते हैं कि नर्स बनना ज़्यादातर लड़कियों का काम है या औरतों का काम है, या डॉक्टर बनना मेल का काम है, या फिर पायलट बनना मेल का है, और स्कूल की टीचर बनना गर्ल्स का है, if you don't endorse that, then you are also a feminist. Yeah? Because all of us, I think, when we sit back and think about it, would say that there is nothing to say that men or women should have different level of entitlements or different levels of opportunities just because of the gender they were born. What I would like to do, that's a different story. What I might do is a different story. What you might do is a different story. But at the end of the day, just because I'm a woman, I should not be expected to be
the caretaker of the home. And just because I'm a man, I should not be expected to be the breadwinner for the home. That is my point. And if you agree with that, then I think we're all feminists, because no person in their right mind would say unequal hona chahiye. So that's where I start with. हमारा भारत देश बहुत महान है. उसमें this is possibly a country where if you look at leaders and politicians and all of that, we have had a lot of women. हमारे संस्कृति में भी we have devis, we have some sadhuis, we have all of that. So women are not unknown to our system, right, in leadership position. And yet, it is only with sadness that one has to say this, that India is also one of the nations where we have the highest level of female feticide. In fact, all of us, all women who are here, are lucky that we weren't killed while we were being conceived, like while we were in our mother's fetuses. And शायद आप लोगों को वो नंबर नहीं मालूम होगा. वो नंबर कई सारे उसके एस्टिमेट्स हैं. पिछले 12 साल में जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो बोलता है 10 million girls have been aborted because they were girls. 10 million, which is in some respects higher than what the number of deaths that the Nazis had caused. ये एक तरह का होलोकॉस्ट हो रहा है जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं. हम अपने ड्राइंग रूम्स में बात नहीं करते हैं, हम अपने क्लासरूम्स में इसकी बात नहीं करते हैं, और हम ये नहीं कहते हैं कि क्यों एक लड़की नहीं पैदा हो सकती है. हम सब लकी हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ. बट ऐसी मेरी 10 मिलियन बहनें हैं, या शायद 15.6 जो एक और रिपोर्ट है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ दिस व्हिच से that actually that many girls have been killed. And in fact, if that doesn't stop, that number is going to affect the social equity, social fabric of the country in the next 10 or 12 years. It's going to poorly affect the fabric of the country. जितना women के लिए कुछ हो रहा है, उतना ही अगर बेस लाइन पे नहीं होगा, then there is something that we are not paying attention. आज ग्लूम एंड डूम की बात नहीं करनी चाहिए, आज सेलिब्रेशन का दिन है, पर आई थिंक जब भी हमें मौका मिले हमें इसके ऊपर मनन करना चाहिए, इसको क्वेश्चन करना चाहिए कि हम अपने घरों में क्या इस क्वेश्चन को रेज करते हैं कि लड़की पैदा क्यों हुई या हो गई तो क्या. इट इज़ नो. एंड सबसे दुख की बात ये है, कई लोग कहते हैं कि ये गरीबों में होता है, ये जो अनपढ़ हैं उनमें होता है. अगर आप देखेंगे इंडियन डायस्पोरा जहाँ भी है, चाहे वो यूएस में है चाहे वो यूके में है, वहाँ भी द नंबर ऑफ बॉयज दैट आर बॉर्न इज मच हायर देन चांस एंड प्रोबेबिलिटी दैन गर्ल्स आर बॉर्न, राइट. तो वहाँ भी कुछ हो रहा है. So it is not among the educated, uneducated, undeveloped that this happens. It is also happening among those families where there is a lot of opportunity and they live in a different context. तो कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ को ले. अगर मैं if I go into various statistics, and I have been doing research on this for many years, चाहे हम एजुकेशन में देख लें, चाहे हेल्थ के एक्सेस में देख लें, चाहे हम किसी में भी देख लें, हर एक उसमें विमेन, इवन with our neighbors, the poorer neighbors like Bangladesh, Sri Lanka, we are worse off. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हालांकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ रहा है लड़कियों का कॉलेज एंड स्कूल में, workforce participation is dropping. We are the only country where the workforce participation of women has dropped by 11%. It's not a joke, it's not an insignificant finding. Everyone is asking this question कि हो क्या रहा है.
औरतें पढ़ लिख जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फिर भी दे आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कफोर्स. इनफैक्ट जो वो 25 साल पहले कर रही थी, जितनी औरतें कर रही थी, उतनी आज नहीं कर रही हैं. एंड दैट ड्रॉप इज बाय 11%. या सो आई थिंक हम सब एजुकेटर्स, हम सब पॉलिसी मेकर्स, हम सब जो एजुकेटेड थोड़ा सा सोचने वाले लोग हैं, हम सबको ये प्रश्न बार बार हर फोरम में पूछना चाहिए और हर अपने लेवल पे और अपने जितने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उस पर डेफिनेटली इसको रेज करना. हमारी बहुत सारी यंग लड़कियां यहाँ बैठी हैं जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो शायद करियर बनाने की कोशिश करें. मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ें, पर ये नैरेटिव को बाय मत करिए कि पढ़ लिख कर घर बैठकर आप अपने और अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं. आई डोंट थिंक that is a narrative that we should buy into. I think each of the women sitting here who are right now in college must also see what are they going to do with their lives and contribute to the subject that they are studying and make a career in it, rather than simply say पढ़ लिख लिए, अब अच्छी शादी हो जाएगी, अब हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे. Yeah, that is not what एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज फॉर. स्कूल एजुकेशन तक चलेगा. हायर एजुकेशन में जब आप आ गए हैं तो आपको ये प्रण लेना होगा. आपके टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मोटिवेट करें, अपने घर में इसकी लड़ाई करें कि आप बाहर काम करने जाएंगे. घर के काम को मैं कम नहीं बता रही हूँ, पर सिर्फ ये कह रही हूँ कि घर के काम के साथ आप पढ़ाई कर रही हैं ताकि आप इस फील्ड को और इस करियर में कंट्रीब्यूट कर सकें, जो भी जिस भी फील्ड में आप पढ़ रही हैं और जिस भी फील्ड में आप कर रही हैं. और जो यंग स्टूडेंट्स लड़के बैठे हैं, वो भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने क्लासमेट्स को, अपनी क्लासमेट्स को हर वक्त इस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करें कि हम क्या जॉब करेंगे और हम कब आगे बढ़ेंगे. क्योंकि इवन आई एम अहमदाबाद में, जहाँ मैं फैकल्टी थी और अभी भी हूँ, जब हम लड़के और लड़कियों की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, लड़के बात करते हैं हम करियर में कैसे आगे बढ़ेंगे, लड़कियाँ और लड़के उनके साथ जब बात करते हैं तो उनको कहते हैं तुम्हें तो जॉब मिल ही जाएगी और फिर तुम एनीवे शादी कर लोगे और फिर तो 10-12 साल बाद शायद नौकरी भी नहीं करोगी. You know, that is the level of conversation that happens at a premier institution. My request is, can we curb some of these conversations? Can we highlight some of these conversations? जिस तरह आप घर रह सकती हैं, उसी तरह लड़के भी घर रह के घर का ध्यान रख सकते हैं. हमारे पास कोई स्पेशल we don't have anything special to say that I should be able to take care of the house and the gentleman sitting here can't take care of the house. I should be, मैं बच्चों को जन्म देना सिर्फ औरतें कर सकती हैं, बच्चों का पालन पोषण औरतें और मर्द दोनों कर सकते हैं. इसमें कोई इनइक्वालिटी की बात नहीं है, इसमें कोई इक्विटी की बात नहीं है, सिंपल सी बात है. सो मैं ऑफ कोर्स अपने 55 साल में, जब से मैं पैदा हुई हूँ अभी तक, कभी भी नहीं समझ पाती थी. आई थिंक आई हैव ऑलवेज lived with this question. I have no reason why, how this happened, but I have always lived with this question. How can I be equitably treated? Not equally treated, but how can I be equitably treated? I've always had this question to my mother, to my father, to my brother, to my sister, to everybody. And I think it's a right, in a way, it's an important question to ask. And उसी के बलबूते पे, right, हम सब, I think, ये कह सकते हैं कि हम आज, मैं एटलीस्ट ये कह सकती हूँ कि मैं आज जहाँ पर हूँ, मैं अपनी कैपेबिलिटी से हूँ. Not because I'm a woman, not because I had a parent who was, helping me get here, not because I was married into a family which helped me get here. मैं अपने बलबूते से हूँ. And I think ये बहुत सी महिलाएं आज नहीं कह पाती हैं. एंड मैं चाहती हूँ कि अगले 10-12 साल में बहुत सी महिलाएं ये कह सकें कि आज मैं जहाँ हूँ मैं अपने बलबूते पे हूँ.
And jab wo din aayega, that day I will be a very happy person. And hoping that all of you will contribute to each other's happiness and my happiness, I will stop here. Thank you so much. Very strong message, madam. Very strong message you conveyed, and I'm more than sure that it has been well received. Now, I'd like to have Professor Sarika Abhay on stage to introduce us to our guest, Professor Snigdha Patnaik, who is Pro-Vice-Chancellor, Delhi Skill and Entrepreneurship University. Professor Snigdha Patnaik is an academician, consultant, and trainer who has done extensive work in the areas of human resource management and behavioral science for over 3 decades. Her domain of expertise include managerial excellence, personal effectiveness and growth, women's leadership, organization development, team building, and the learning and development. She is a visiting faculty at the Indian Institute of Management, Ahmedabad, for programs in women's leadership, personal growth and self-awareness, and at the Universidad Loyal Andalusia, Seville, Spain. She is the recipient of the ARYA Award 2016 by the Parichay Foundation in recognition of her contribution and achievement in the field of education. Professor Snigdha is a postgraduate in HRM from XLRI Xavier School of Management, Jamshedpur, and doctorate in personal management from Utkal University, Odisha. Now I request the convener of event, Dr. R.K. Ghai sir, to escort Madam to the stage. I also request our CEO Madam, Vice Chancellor sir, and Chancellor ma'am to come on stage to felicitate Dr. Professor Snigdha Patnaik. I now request Honorable Chancellor Madam to honor her by draping the Angavastram. Thank you very much, ma'am. I now request Honorable Vice Chancellor sir to present the citation. Thank you very much, sir. Now I request Professor Snigdha Patnaik, Madam, to share a few words on this occasion. Good morning, everybody. And thank you. Thank you for inviting me. Thank you for this opportunity. Thank you because I feel very privileged to be invited to a university where one sees so much of women leadership. It was very heartening to hear about the whole list of people, of women who are in leadership positions in the university. And at one level, I also ask, why should it be heartening? Shouldn't it be the order of the day? One does not question when there are men in leadership positions in an institution, whereas when there are more women in leadership positions in institutions, one says, wow, wonderful. And maybe in the way in which we are moving, in the way in which we are progressing, someday this particular comment may become irrelevant, and one will hope for such a day to come. Let's see. Hopefully, our society and our ecosystem will move in that way. I was listening to Professor Vohra and what she said about women. And at one level, yes, it's very, very sad that this is happening. And we should, of course, each in our own ways, do things that changes this in terms of our own actions, in terms of how we interact with others, in terms of what we teach, not just
the women in the family, but also the men in the family. Because we have to move together and society. We have to, men and women have to walk hand in hand to be able to move society forward. As I was thinking about what I should say, one of the things that came to my mind is that, I hope that all of you who are here, women who are here, men who are here, men, of course, will take up jobs, make careers. Women who are here, I hope that you will, young women, you will make your careers. You will move out of the home, not just work in the home and all women work at home, but you will also move out of home and work. And you will be able to do things that make that possible, and that you will all become achievers. And there are really two things that come to mind when one looks at what makes a woman an achiever. One is that, there is research that says that when an opportunity in an organization is presented, if a woman is 100% sure that she will be able to do it, she will put her hand up. Whereas a man, if he's only about 60% sure that he has the capability to do it, he will put his hand up. And as a consequence, what happens is that women hold back. Women don't put themselves out there. Women keep battling with this sense of inadequacy that they have, and therefore lose opportunities and are not able to move up. My hope, my earnest request to all of you young women here is that when you are working in an organization, please make sure you put your hand up. Please make sure you step out there and take the opportunity, because that is the only way you move forward. Take pride in what you are. It's okay. Everyone makes mistakes. One of the things that I have seen happen with women, professional women, is that a lot of them are perfectionists. We, as women, and I started working in a corporate organization many, more than 40 years ago. And one of the things that I struggled with was that I was kind of held up. People were looking at me all the time to see whether I would do well or not. I was the first woman executive in that organization, and people around me were looking at me saying, "अरे हमने woman को लिया है, वो ठीक ठाक करेगी ना, वो कुछ mistake नहीं करेगी ना, वो competent होगी ना, वो decision decisive रहेगी ना." And because of that, what also happens with a lot of women in organizations is that there is this sense of सब कुछ ठीक होना चाहिए, मुझे कुछ mistake नहीं करना चाहिए. And the sense of this fear, really, of failure holds us back, pulls us down. But we are human beings after all. We all make mistakes. A man makes a mistake, a woman makes a mistake. So the second thing I want to say is, don't be afraid of making mistakes. It's okay. Everyone makes mistakes and everyone gets past them. Failure is not fatal for any of us. And the final thing that I want to say is, you will move up in your career. You will hopefully do well. You will be successful. But as I said, for a lot of women, women work outside the home, women work inside the home. A man will come back from work and will watch TV, expect a cup of tea. A woman will come back home from work
and will go and make the tea. A lot of times we as women, we encourage that. We're very happy to make comments like, उनको तो आता ही नहीं है. वो तो एक कप चाय भी नहीं बना सकते हैं. I think the push is to make your partner a real partner. You have to be able to help your partner be an equal partner with you in the home so that equity can happen, so that each of us are able to work well and are able to be productive no matter where we are. Each of us are able to deliver the best both at home and in the workplace. I would wish all of you all the very, very best in your life. I congratulate the women achievers who are here. So proud to have so many of you here and to see that you will be felicitated here. And I hope, as Professor Vohra said, I hope that at some point celebrating Women's Day becomes irrelevant because we will all be equal. And with that hope, thank you very much. Very, very strongly worded message coming there from Dr. Snigdha Patnaik, who is Pro-Vice-Chancellor, Delhi Skill and Entrepreneurship University. Ma'am, very, very, very tender and very veiled ground realities you have unearthed. I appreciate you for the courage to come up with that. And of course, it is all about the belief system, girls. It is about the belief system. So be very careful about your belief system. Be a believer, but also please make sure as to what you believe in, because ultimately that is going to determine the journey that you take on in life. Swami Vivekananda Subharti University goes by the motto, Shiksha, Seva, Sanskar, Evam Rashtriyata. The university has been producing confident, self-reliant, responsible youth having skills, social values, leadership, and entrepreneurship bent of mind for a new age India. And to take you along with the journey of the past decades as to how the university have grown and what all initiatives we have been taking from time to time for the upliftment of the society and the downtrodden, let us have a university presentation now. Yeah, please, it's time for the university presentation. Please go about it. Thank you. Very, very soul-stirring winding up of this presentation. Very moving. So this was the university presentation. We are so very proud to be a part of Swami Vivekananda Subharati University. We have amongst us one more woman achiever, Dr. Sister Christina, who is Principal St. Joseph's Girls Degree College, Sardhana. May I request CEO Madam and Pro-Vice-Chancellor to please offer a sapling to Sister Christina. We are so very glad to have you, Madam, and it's indeed our proud privilege to have you. The services that you are imparting with all the dedication, with all the commitment. Here's a sapling. A sapling to Dr. Sister Christina. Thank you so much. Thank you so much. Well, thank you. Thank you, sir. And may I now request the convener of the event, Dr. Ghai, to please present a sapling to our CEO, Madam. Is she there? No, she's not here. All right, all right. So to continue with the felicitation ceremony,
of our women achievers, I would like to introduce you all to one of the women achievers now, who is none other than Miss Padamshree, Miss Nalini Asthana. It is with great pleasure that I introduce to you our next Vidushi Samman awardee, Padmashri, Miss Nalini Asthana, who is one of the sister duo from Agra in Uttar Pradesh, known for their great performances of the Banaras Gharana style of Kathak. She is also known for her contributions to the popularization of the Banaras Gharana style of Kathak, both in India and abroad. It was a chance meeting with Guru Jitendra Maharaj of Banaras Gharana that brought her to the world of dance and of Kathak. Her first performance with her sister, it happened in Kochi, Kerala, while they were traveling with a guru. She, along with her sister, Miss Kamalini Asthana, set up the Sangeetka Institute of Performing Arts in Delhi in 1975, which is an institute to give training in Kathak and classical music. The first overseas trip was in 1983 to attend the UFTAA conference in Paris, France. Even though the tour was planned for only 2 weeks, they continued their tour and performances for nearly 2.5 years. During this extended trip, the duo performed in Tormenozos and Madrid and Spain, in Dublin, Ireland, and in the Iscon in London. One of the important performances was for BBC's Eastern Eye, hosted by Karan Thapar. They have also made a film titled Voyage of Kathak for the Inner London Education Authority. They also gave lecture demonstrations in many educational institutions in London. They have set a record by dancing at the height of 18,000 feet at Kailash Mansarovar and Badrinath. In the year 2022, Government of India conferred the Padma Shri Award, the third highest award in the Padma series of awards, on Miss Kamalini Asthana and Miss Nalini Asthana for their distinguished service in the field of art. The award is in recognition of their service as an acclaimed Kathak dancer duo from Agra, known for teaching and propagating it globally. I now request Padma Shri Ms. Nalini Asthana to please come up on stage to receive the Vidushi Samman, and I also request Honorable Chancellor Madam and Honorable Vice-Chancellor, escorted by the Pro-Vice-Chancellor and Dr. Ghai, to please come up on stage to do the honors. Yes, Madam Kamalini ji, kindly requested to please come up on stage. May I now request our Chancellor Madam to please drape Angvastram to our women achievers, Padma Shri, Nalini ji and Kamalini ji. And now I request our Honorable Vice-Chancellor to please present the citation to Padamshri Nalini ji. Padmashri. And a citation to Padamshri Kamalini ji. What an honor. We are so very proud to confer the Vidushi Samman on the greatest exponents of Kathak. Madam, we would request you to share a few words.
मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं दोनों बहनों को आज से नहीं, आई थिंक 1990s की शुरुआत से जानती हूँ, और इतनी ग्रेट आर्टिस्ट होने के बावजूद भी इतनी आई वुड से ह्यूमिलिटी है इन लोगों में कि ये वो बहुत सराहनीय चीज़ है। और मैं जब डायरेक्टर कल्चर थी यूपी गवर्नमेंट में, जब भी मुझे कभी सलाह की ज़रूरत होती थी या आई वाज I had needed some help, they were always there, and so willingly and so lovingly. मुझे कभी नहीं लगा कि ये मुझसे अलग हैं. They are part of my family. Thank you so much. हरिओम। इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम, सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा हृदय से अभिनंदन। जब बहुत समय बाद मिले तो बहुत कुछ कहने, बोलने, सुनने को होता है, वही मेरे साथ हुआ। स्तुति जी ने अभी बोला, वो मेरी बहन के तरह हैं। रोली, मुक्ति, स्तुति, इतने अच्छे अच्छे नाम हैं जो पूजा अर्चना में सुबह से काम आते हैं। क्या अच्छे सोच के रखे, और उन्होंने भी अपने जीवन को समर्पित किया देश के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है देश में अगर आप कुछ करना चाहें तो आप या तो नेता बने या फौजी बने। आप जिस भी फील्ड में हैं, देश के एक समाज के लिए अच्छी सोच रखें और अपने ही जो कार्य है उसमें निपुण होकर सामने आए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने माध्यम से, समाज के लिए, देश के लिए और इस मानव जाति के लिए। यही सोच से ये परिवार आगे चला और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो दुनिया भर की कितनी यूनिवर्सिटीज़ में गई हूँ, 1-1.5 इंस्टीट्यूशंस में मैंने लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस दिए हैं। इतना अच्छा ऑडिटोरियम मैंने शायद ही किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज कहीं देखा होगा। ये आपका सौभाग्य है। हमारे दिल्ली के श्री कमलनी जी मुझसे ये कह रही थी कि हमें नृत्य करने का मन कर रहा है, वील कम एंड डांस ओवर हियर। ऐसा होता है, कई लोग आर्टिस्ट के लिए वेट करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट अच्छे मंच के लिए वेट करते हैं। इसमें बस मुझे एक छोटी सी कमी दिख रही है, वो है वाइब्रेशन की, क्लैप्स की वाइब्रेशन। मेरे लिए मत करिएगा, ये भरपूर होनी चाहिए। पता है, जब हम किसी भवन में जाते हैं, मैंने अपना इंस्टीट्यूट बनाया, जहाँ अभ्यास करते थे वो छोटा सा कमरा था, लेकिन कुछ भी इच्छा लेके चले जाइए वो पूरी होके निकलती थी। ऐसे बहुत अनुभव है, बताऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। दैट वाज साधना की जो वाइब्रेशन थी उसमें थी। तो हमने जो नया भवन था, सभी कलाकार को बुला के उसमें नृत्य करवाया, उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए। इसलिए ऑडिटोरियम की पॉजिटिविटी क्लैप से होती है। पॉजिटिविटी आप जब देंगे तो आपको भी वापस मिलेगी। तो इसमें सब चीज़ संपूर्ण है, आप लोगों का एक योगदान चाहिए, वो भरपूर। जो भी कलाकार है, जो भी वक्ता है, जो भी व्यक्ति अपने भाव अभिव्यक्त करे, आपकी तरफ से चाहिए। नृत्य के बारे में आपने बता दिया। मेरा ऐसा मानना है, ईश्वर सब में एक पात्र ढूंढता है, हम बाध्य हो जाते हैं उसे पूरा करने के लिए। ईश्वर ने हमें भी एक पात्र ढूंढा, उसी राह पे अग्रसर हुए। पाँव कहीं और जा रहे थे। आई वॉज इनटू केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली IIT, शी वॉज इनटू मेडिकल। पर जब गुरुजी का सानिध्य मिला तो मुझे लगा जीवन संपूर्ण है इसमें। ये सब विधिवत है, जो वो चाहता है वो करवा लेता है, जिससे चाहे पात्र ढूंढ लेता है। हम तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह उसके साथ रहते हैं, वो नचाता रहता है। लोग कहते हैं आपने किया, हम कहते हैं उसने करवा दिया। हम वही कर रहे हैं। जब नहीं चाहेगा तो 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। अपनी साधना से कुछ अर्जित मिले, एक तो विधिवत। अब सब बहुत लिटरेरी पीपल हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर द स्टूडेंट्स, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आई कैन सी। एक हमें अक्षर ज्ञान मिलता है जो गुरु से हमें कॉलेज, स्कूल, कहीं पे भी जाके मिलता है। एक हमको मिलता है सानिध्य का, तीसरा मिलता है अनुभव का, और आखिरी मिलता है संघर्ष का। जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, लोग हमें एक स्थान पे सोचने लगते हैं, तब हमारा कर्तव्य होता है हम समाज को क्या दे सकें जो हमने अर्जित किया है उससे। सिर्फ अपने लिए ही करके चले जाना, इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक कमरे से काम चल जाता है।
एक वक्त के खाने से, लेकिन जो हम अपनी साधना से, अपने कर्म से, अपने भाग्य से अर्जित करते हैं वो दूसरों को कितना देके जा सकते हैं, क्योंकि आना और जाना तो चलता रहता है, लेकिन हमारे द्वारा अर्जित चीज़ दूसरों के काम आए, क्योंकि भाग्य हर एक के साथ नहीं होता। भाग्य और बुद्धि एक साथ चलती है, जैसा भाग्य होता है वैसी बुद्धि हो जाती है, और भाग्य भी अर्जित होता है कर्म से। हम अपने कर्म से जितना संलग्न होकर आगे चलते रहेंगे उतना हम अर्जित करते रहेंगे और अपनी अर्जना से दूसरों को देते रहेंगे। यही मानवता है, यही मनुष्यता है। आज जिस अवसर पे हमें अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, वो है अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। बहुत से लोग बातें करते हैं, कहते हैं, बहुत कुछ चलता है, लेकिन जब तक हम उसे, हमारा दुख खुद का नहीं होता, दर्द नहीं होता, तो उतना हम अनुभव नहीं कर पाते। सच मानिए तो मेरे परिवार में मैंने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मैं लड़की हूँ, और मैंने अपने जीवन में भी कभी नहीं सोचा मैं लड़की हूँ। मनुष्य हैं, बराबर हैं, सब एक साथ हैं, कोएड में पढ़े। माय फादर वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर, ही फॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमेशा उन्होंने इक्वलिटी दी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही सम्मान लड़कियों को दे दिया, फ्रीडम दी। और अभी भी कहीं पे भी आप जाए तो भाई हैं, अब कोई है, वो उतना ही सम्मान देते हैं। माय यंगर ब्रदर्स आईजी इन बीएसएफ, माय यंगर ब्रदर अदर वन इज़ हिस्टोरियन। बट आप कहीं पे भी कहेंगे तो लगेगा नहीं कि मेरे सामने एक ऑफिसर खड़ा है। वो विनम्रता से उतने ही तरीके से हमसे बिहेव करते हैं। और हम समाज में देखते हैं कि भारतीय पुरुष उतने अच्छे आपको समाज में नहीं मिलेंगे जो आपको उतना आदर देते हैं। आप कोई भारी चीज़ उठा के जाइए तो सही, किसी देश में नहीं कहेंगे मे आई होल्ड फॉर यू, अपने कहेंगे बहन जी हम पकड़ लें, माता जी हम ले लें, फ्रेंड के तौर पे कह देंगे लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। और जहाँ तक आप कहें, जितना आदर भारतीय समाज में नारी को मिला है, मुझे नहीं लगता कहीं मिला है। आपको इक्वलिटी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकम डिजर्विंग बिफोर हैव ए डिज़ायर, ये मैं हर व्यक्ति से कहती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ। जब तक आप डिजर्विंग नहीं होंगे, डिज़ायर रखेंगे, रिजर्वेशन चाहते रहेंगे और आप रिजर्वेशन में ही रहेंगे, आप उस जगह नहीं आ पाएंगे कि रिजर्वेशन से ऊपर निकल के एक सुपरविजन में आए, लोग आपको पहचाने, आप एक आदर्श के रूप में सामने खड़े हो सकें। प्रकृति ने भी हमको सब चीज़ बराबर दी है। अगर हम अर्धनारीश्वर नृत्य में लेते हैं, आधा कहीं ये हाथ छोटा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, एक पाँव छोटा नहीं है, सब बराबर हैं, आँख भी बराबर है, एक से भी काम चलता है, लेकिन बैलेंस दिया है। एंड दिस बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी ऑल्सो। प्रकृति में भी बैलेंस है। जब ये बैलेंस खराब होता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं अपनी कुछ पंक्ति रख के इसको समाप्त करती हूँ, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं। प्रकृति में हम आकाश देखते हैं और धरती देखते हैं। आकाश को पुरुष तत्व मान लेते हैं और धरती को नारी। हो नहीं सकता, छू नहीं सकता। देखिएगा, आसमां जितना भी झुके जमी हो नहीं सकता, जमी जितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं। मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। इतनी सी भी ज़मीन नहीं मिलेगी जहाँ आकाश नहीं है, इतना भी आकाश नहीं मिलेगा जहाँ ज़मीन नहीं है। मतलब ईश्वर ने भी सबको बराबर दिया है, तो हम हैं ही बराबर। लेकिन क्या कहते हैं, आसमां जितना भी झुके ज़मी हो नहीं सकता, ज़मी जितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं। मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। लेकिन मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज महज एक धोखा है, बिछुड़ कर कभी किसी से कौन चैन से सोया है, और शबनम का हर कतरा इस बात की देता है गवाही। धरती ने अपना आंचल रात आंसुओं से भिगोया है, लगता है आसमां भी रात भर रोया है, लगता है आसमां भी रात भर। इस सोच के साथ चलेंगे हम। एक लोग मरने के बाद कहते हैं हमको स्वर्ग मिले, हम इस धरती में स्वर्ग क्यों ना बनाएं, क्योंकि हमारे हाथ में ही है, दूसरे के हाथ में क्यों ना दें। हम क्यों दें किसी के हाथ में, हम इसी धरती को स्वर्ग बनाएंगे। शी इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ, शी इज़ द सोल बिहाइंड ऑल द क्रिएशन, शी लीव्स हर फुटप्रिंट ऑन द माउंटेन्स एंड द ओशन। She has no desire, she gives and asks for no returns. She is there because of, I am there because of she. She is there because there is universe, and universe is there because there is she. धन्यवाद, हरिओम, जय हिंद, नमस्कार।
Thank you, madam. It was so beautiful, it was so lovely and so powerfully emotional. Uh, can I request, I would like to say something? All right. Thank you, thank you. Thank you very much. कहूँगी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पाँव बोलते हैं, हम तो कम बोलते हैं. तो नलिनी जी इज ए गुड ओरेटर, शी स्पीक्स वेरी वेल. मैं उनको एडमायर करती रहती हूँ. अभी परसों तरसों हमारा एक गुफ्तगू का कार्यक्रम था, उसमें मेरा गर्दन इन्हीं की तरफ रही तो मेरे को प्रोड्यूसर कहने लगे आप इधर भी देख लीजिए. आप उन्हीं को सुने जा रही हैं और इरशाद इरशाद कहते जा रही हैं. कोई बात नहीं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, जैसे स्तुति जी ने कहा, आई एम रियली मूव्ड टुडे एंड आई एम मिसिंग वन पर्सन, माय डियर मुक्ति जी. एंड उनका नाम ही मुक्ति है, मुझे लगता है उनको अवश्य मुक्ति मिल गई होगी, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद कर करके अपने साथ रखते हैं. और हर आई एम स्टिल रिमेम्बरिंग हर स्माइलिंग फेस व्हेन आई केम लास्ट टू दिस यूनिवर्सिटी. एंड भावना जी हमें याद करती रहती हैं, इनका प्यार है. और मुझे हमेशा सुभारती में जाना, एक तो नाम इतना खूबसूरत है सुभारती, वहाँ आना मुझे हमेशा एक लगता है एक मैं कोई तीर्थ में जा रही हूँ. वहाँ मैं सराबोर होके आऊँगी, कुछ लेके आऊँगी. और ये एक जने की जब तक आपका संकल्प बहुत दृढ़ नहीं होता ऐसे काम होते नहीं हैं. एक सुपरफिशियल होता है, एक साधना होती है. जैसे अभी नलिनी जी ने 4 चरण बताए, तो ये संघर्ष, अनुभव, साधना सब कुछ उन्होंने करा है. और मैं हमेशा से आपके साथ हूँ स्तुति जी, और आपका पूरा पूरा हक है हमारे ऊपर, जो आप कहेंगी हम लोग करेंगे. बाकी इतना खूबसूरत मंजर, इतनी खूबसूरत चीज़ें, और दुनिया इतनी खूबसूरत है कि जाने को मन ही नहीं करता. लेकिन हम फिर आएंगे आप लोगों के बीच में और एक बहुत खूबसूरत सी नृत्य नाटिका करेंगे. मैंने इनको अपना नाम भी बताई, कृष्णमयी मीरा अंडाल. कृष्ण की 2 बहुत प्रिय भक्त रही हैं, एक मीरा और एक दक्षिण भारत में थी अंडाल. उसकी बड़ी खूबसूरत स्टोरी हम लोगों ने एक नृत्य नाटिका बनाई है. यशोधरा करा है, राम की शक्ति पूजा किया है. ये सब चीज़ें हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रस्तुत करेंगे, इस मंच के लिए प्रस्तुत करेंगे और स्तुति आपके लिए करेंगे. एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपने हमको स्मरण किया. और सभी अवॉर्डीज, सभी वक्ता इतने खूबसूरत थे, बहुत अच्छा बोले. और थैंक यू फॉर द नाइस ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. थैंक यू वेरी मच. Thank you, madam. Would you like to say, madam, something? I might as well. It's a visual delight. दोनों बहनों को नाचते देखना. I mean, I've never seen anything so loving, so much of coordination. And Nalini ji always gives way to Kamalini ji. You know, this is something which is love, true love. Thank you, madam. Thank you so much. I would now like to have Professor Anshu Sirohi on stage to introduce us to one of our women achievers today, Ms. Richa Singh, who is founder and chairperson, Global Social Connect NGO, Delhi. Professor Anshu Sirohi, can I have you on stage, please? Thank you, ma'am. I am honored to present the introduction of Mrs. Richa Singh, founder and chairperson of Global Social Connect, a non-profit organization. She is state president for Women India Chamber of Commerce and Industry. It is a non-profit premier national business chamber for women, envisioning global impact for women entrepreneurship. Wiki is supported by the massive global and influential women's network that is G100 All Ladies League, Women Economics Forums, She Economic, with 250,000 members, industry leaders worldwide. She also heads futsal initiatives at the renowned Delhi United Football Club and activities enthusiast. She was the convener for Delhi Women's Committee, Delhi Football Association,
for 2019 to 20. Now I request our convener, IWD, Professor R.K. Ghai, to escort our guest of honor, Mrs. Richa Singh, to the stage to receive the Vidushi Samman. Now I request Honorable Chancellor Madam, CEO Madam, Vice Chancellor Sir, to kindly on stage. Now I request Honorable Chancellor Madam to honor her by draping Ang Vastram. Now I also request Hello. Honorable Vice Chancellor to present her with the citation. Yeah, please switch on the lights, please. Let us have some lights on the stage. Thank you, ma'am, and thank you, sir. Stage pe lights around kariye, please. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Now we request the Honorable Vice Chancellor to please present citation to Madam Ms. Richa Singh. Thank you, Madam. It's an honor to felicitate you for the services that you have been giving to the society. And I would now like to request you, ma'am, to please. Now I request honored guests to share words of experience. Good morning, everyone. A very beautiful good morning to everyone out here, because I see every lady, a very beautiful lady today. Since everybody says that each and every day is a Women's Day, that's true. But we also celebrate some of the days like Holi, Diwali in one day. So why not Women's Day? This is the day where we feel out of our mind, we are in this space today. Why not? What's wrong in it? Nothing wrong. When we say few words, super women or wonder women, and if we edit these words, if we cut these words, super and wonder, then also the meaning is the same. So women is in herself a super woman and a wonder woman. I always say, dare to follow your dreams. In WICCI, Women Indian Chamber of Commerce and Industry, we always say this thing. क्यों रहे छुप कर अब? अभी नहीं तो फिर कब? So come up and chase your dreams. We go to the underprivileged society, and there we face a different society, what we are having today here. When we went there to tell them about these schemes that government has launched for women, the first thing they had in their mind was कि आज इस सभा में हमें जो बुलाया गया है, वहाँ ये हमें क्या देंगे, क्या मिलेगा? अरे मैडम इतनी छोरी हो रही हैं हमारे, क्या दिया सरकार ने? And the question we asked them, ये छोरियां सरकार से पूछ के की थी? नहीं ना? तो जब की थी तो अपने बलबूते पे इन छोरियों को बड़ा करो। और छोरियां क्या छोरों से कम हैं? ये तो सभी को पता है। तो जब सब कुछ पता है, and the day when a girl is born, she is empowered. She has inbuilt qualities. She has default qualities, जो कि किसी और में हो ही नहीं सकती। वो बिना पढ़े भी सब कुछ मैनेज कर लेती है। She has an MBA डिग्री, उसके पास एक MBA डिग्री होती है बिना MBA डिग्री लिए हुए। तो सोचिए जब वो डिग्री मिल जाएगी तो वो क्या क्या कर सकती है। दिस इज विमेन। तो विमेन अगर विमेन को ही अंडर एस्टिमेट करेगी तो फिर मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी। सो वी शुड पुट एम्फेसिस ऑन सिस्टरहुड। अगर हम एक दूसरे को एंकरेज करें, मोटिवेट करें, लाइक I can proudly say today that I'm standing at the platform of Subharti University, which gave me 80% more motivation today to do my work, each and every work, each and everything I plan
for my organization to do for the society. I'm very thankful to this organization, to this university, and the hierarchical structure of super ladies in the leadership. I'm really thankful today to stand here and to go out from here with full power in myself and to work with more enthusiasm. So girls out here, please feel this power and go with this power. I just want to end up with the saying that please don't think that you cannot do anything, you can do everything. तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल और निकलता रहे, निकलता रहे. आज आपको उस खोज से निकलना है और उस खोज से अपने आप को खोजना है कि आप क्या हैं. जब सब कुछ आपको पता है, जब आपको पता है that you are empowered already, तो हम क्यों मौका दें किसी को कि विमेन एम्पावरमेंट जैसे विषय पर हम लोगों को कोई अवेयर करे. वी आर ऑलरेडी अवेयर. कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की सोसाइटी से बाहर हैं, उनको थोड़ी सी सशक्त बनाने की ज़रूरत है. Rather, I should say, they are already empowered. The need is to change their mindset. And if that mindset is changed, feel the difference. Thank you so much. Very powerful message there coming from the chairperson of an NGO. Madam, I can feel the emotion, I can feel the thought that has gone behind the organization that you are, helming. Thank you very much once again. I would now like to introduce you all to our honorable chief guest, Dr. Pankaj Mittal. Dr. Pankaj Mittal, Secretary General of the Association of Indian Universities, is the second woman Secretary General of the association in its 96 years of existence. Now, this is called a feat, and this is also something that Miss Nalini was referring to, that you have to deserve before you desire. So, a very good example. Prior to joining AIU, she has been serving the higher education sector, especially university education, for more than 3 decades at the apex regulator of higher education, the University Grants Commission of India. Dr. Pankaj Mittal is a Fulbright scholar and has been a topper in MSc and PhD in agricultural statistics from IARI New Delhi. She has a whole wide-ranging experience of more than 3 decades in higher education in policy, planning, and management of higher education. She is also National Commissioner for Rangers of Bharat Scouts and Guides. Dr. Mittal earlier served as the first regular Vice-Chancellor of Bhagat Singh Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur, the first rural women university of North India in 2008. At a very young age of 44 years, to undertake an onerous task of developing a tiny Gurukul into an institution of repute. Dr. Mittal introduced a series of innovative practices and reforms as the Vice-Chancellor of the only rural residential multi-faculty women's state university of the country, imparting education to 7,000 girls from KG till PhD level in a holistic manner. During her stint as Vice-Chancellor, Dr. Mittal transformed the Gurukul into a university which is now on the international map. Her contributions in institution building, coupled with blending of traditional and modern education, is an exemplary contribution towards promotion of rural women folk in a unique manner. Dr. Mittal has visited a number of countries for various assignments. She has led a delegation of 15 vice-chancellors to UK for academic collaborations.
She has been a recipient of following awards and honors like Fulbright, as I said already, Nehru Scholarship Grant for Educational Administrators, then President of India Award in 2017 for digital initiatives in higher education, honorary doctorate DLIT from Karnataka State Women's University, Bijapur, Karnataka, first Padamshree Suhashini Devi Award 2018 for contributions in societal development and community engagement from the Chief Minister of Haryana, and Quipro Gold Standard Award for Leadership in Education for the year 2018. Dr. Mittal served as a member of various high-powered committees and professional bodies, including Future of Education of Niti Aayog, Government of India. And there is a complete roster of the committees that she has been a very, very important part of. She has published a number of papers, articles, occasional papers, and reports on issues relating to higher education and women empowerment in national and international journals. Such is the power-packed roster of achievements and accolades of our chief guest for this day today. Ma'am, we are so very honored to have you here, and may I now request you to please come up on stage, escorted by the convener of the event, Dr. Ghai, Pro-Vice-Chancellor, very Honorable Vice-Chancellor of Swami Vivekananda Subharti University, and Chancellor Madam. Let us have the honor, ma'am, to felicitate you and the services that you have been rendering towards one and all. I would now like to request Chancellor Madam to please drape Angvastram on our chief guest, Dr. Pankaj Mittal. Now, the Vice Chancellor with the citation to the chief guest, Dr. Pankaj Mittal. Madam, we are so very honored, along with the Pro-Vice-Chancellor, Dr. Abhay M. Shankar Gaura. We are absolutely honored, ma'am, to have you with us. And here comes our very, very sporty CEO, Dr. Shalya Raj, very athletic. Here she is, never lags behind, a front runner. Yes, madam, and here's a gentle request for you to please share some valuable thoughts. Yes, please. Some lights there. A very good morning to all of you. The Chancellor of the University, Dr. Stuti Kakkarji, whom I am seeing here as a very, very active female. The Vice Chancellor of the University, Dr. G.K. Taplialji. The founder, Dr. Atul Krishnaji, CEO, Dr. Shalya Raj. I must admire Shalya. I mean, I'm seeing her running like anything and administering such a big university. So thank you, Shalya, and I'm proud of you. Neharika ji and Sanigdha ji, who has just left. We have just heard Kamalini ji and Nalini ji, who has given a very, very good lecture just now. I was so happy to hear her. All the faculty members and very, very dear students. First of all, I would like to thank Subharti University for inviting me here as a chief guest on this very important occasion, the International Women's Day. और आप सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बधाई देती हूँ. And I think I'll also take permission to speak in Hindi because, see, earlier we used to speak in English. Mostly we used to speak in English. But then I heard a
one line from a poem by Pritam Singh Pritam. आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. It said, तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में. आजकल आज़ादी की बहुत बात करते हैं ना बच्चे, जब भी चाहे JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में तो आज़ादी की बहुत बात होती है कि हमें आज़ादी चाहिए. तो तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में, हस्ताक्षर भी करते हो एक विदेशी भाषा में. तो जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो मुझे लगा कि सचमुच में हम सब लोग एक विदेशी भाषा में सिग्नेचर्स करते हैं, विच इज़ नॉट राइट. And we should be speaking in Hindi wherever the audience is such that you can understand Hindi. पर दूसरा हमारे देश में ऐसा भी हो गया है ऑफ लेट कि if somebody speaks in Hindi तो ऐसा लगता है कि शायद इसको इंग्लिश आती नहीं होगी, तो इसलिए पहले इंग्लिश बोल के दिखाओ कि आपको इंग्लिश आती है, बट हिंदी इज़ माई प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो therefore I'll speak in Hindi. So when I was sitting here तो मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया. बीच बीच में इंग्लिश आएगी क्योंकि आदत इंग्लिश की पड़ गई है बहुत सालों से. तो कुछ मैं डेटा देख रही थी तो मैंने देखा कि 1933, अभी बहुत सारे बच्चों ने शायद एक सीरियल देखा होगा रॉकेट बॉयज़. उसमें बहुत, अगर नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें होमी भाभा का, विक्रम साराभाई का कैसे IIM बना, कैसे IISc बना, कैसे टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना. बहुत ही अच्छा सीरियल है. तो IISc के जो डायरेक्टर थे CV रमन, कैन यू इमेजिन कि 1933 में CV रमन, एक लड़की थी कमला सोहनी, कमला सोहनी को एडमिशन नहीं दिया IISc बेंगलोर में, जो कि प्रेस्टीजियस नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हमारे देश की. क्यों? क्योंकि शी वॉज अ वुमन एंड शी हैड टू फाइट फॉर इट. इतना फाइट किया, फिर उसको एडमिशन मिला, बट विथ सर्टेन कंडीशंस. तो दैट वाज द स्टेटस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पर आज क्या है? आज 88 ईयर्स के बाद अगर हम देखें कि हमारे देश में कितने बच्चे हैं ET में 32%, मतलब ET मतलब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, IT में 52%, रिसर्चर्स 14%. एंड अगर इसको आप दूसरे देशों से कंपेयर करें लाइक USA में, तो हमारे जहाँ 32 है तो USA में 20% गर्ल्स ही जा रही हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में. यूरोप में खाली 28% जा रही हैं, पर हमारे देश में 32% गर्ल्स जा रही हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में. IT में हमारे देश में 52 जा रही हैं, USA में सिर्फ 19 और यूरोप में अगेन 19. तो हमारे देश की लड़कियां पढ़ने में सब देशों की लड़कियों से ज़्यादा आगे जा रही हैं, वेदर इट इज़ अ स्टेम सब्जेक्ट. स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंसेस. तो हमारे देश की आगे जा रही हैं. रिसर्चर्स भी हमारे देश के अच्छे हैं. पर ऐसा क्या होता है कि जैसे अगर हम स्टूडेंट्स देखें, परसेंटेज वाइज भी देखें, तो अंडर ग्रेजुएट में 50%, पोस्ट ग्रेजुएट में 58%, PhD में 42%, MPhil में 62% फीमेल्स. मतलब सो मेनी गर्ल्स आर देयर इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. पर जैसे ही आप देखते हैं कि लेक्चरर्स कितने हैं, 42%, रीडर्स थोड़ा कम होकर 37% हो जाता है, प्रोफेसर्स 27% रह जाता है. पर जब आप वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो 5% ही रह जाता है. तो जब और किसी भी कॉन्वोकेशन में, एनी कॉन्वोकेशन आई गो, जो मेडल विनर्स, जो फर्स्ट प्राइज होल्डर्स, ऑल विमेन. मतलब मेन तो बड़ी मुश्किल से कहीं 1-2 लड़के दिखते हैं. हमें बच्चों को कहना पड़ता है, लड़कों को, कि भाई बका तुम भी थोड़ा मेहनत कर लो. लड़कियां सारे अवार्ड्स लिए जा रही हैं, सारे प्राइजेस, सारे मेडल्स लिए जा रही हैं. पर उसके बावजूद ऐसा कैसे होता है कि हमारे देश में मतलब विमेन को वाइस चांसलर्स में 5% क्यों? वाई ओनली, मतलब 95% मैन एंड 5% विमेन वाइस चांसलर? तो ये बात बाकी सब लोगों ने बोल दी है, पर उसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से बोलूँगी. मुझे लगता है कि थ्री रीजंस आर देयर. वन इज स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि कौन सा काम मेन करेंगे, कौन सा विमेन करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप आंखें बंद करके किसी साइंटिस्ट के बारे में देख सोचो तो क्या चेहरा सामने आएगा? एक बड़े बड़े बालों वाला एक आदमी का चेहरा सामने आएगा. किसी डॉक्टर के बारे में सोचो, किसी इंजीनियर के बारे में सोचो, किसी पायलट के बारे में सोचो, तो एक मेल चेहरा हमारी आंखों के सामने आएगा. पर जैसे ही आप एक टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोचो, नर्स के बारे में सोचो, टेलीफोन ऑपरेटर के बारे में सोचो, तो एक फीमेल चेहरा सामने आएगा. क्यों? तो दिस इज़ द स्टीरियोटाइपिंग. अभी हमारे से पहले भी एक जो वाइस चांसलर थे स्किल यूनिवर्सिटी की, निहारिका जी, उन्होंने भी ये बोला कि समहाउ बहुत सारी पायलट्स विमेन है. अभी आपने देखा कि एक 4 विमेन पायलट में लॉन्गेस्ट जर्नी ट्रैवल करके एयर इंडिया का विमान पे आई थी. तो
इन स्पाइट ऑफ दिस कि बहुत अच्छी अच्छी इंजीनियर्स, चंद्रयान में बहुत सारी विमेन थी, हम लोग स्टीरियोटाइपिंग में जब फंसे रहते हैं ना कि हाँ बड़े बड़े काम शायद आदमियों के लिए हैं, छोटे छोटे काम लड़कियों के लिए हैं, तो दैट इज़ समथिंग जो हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंकना है कि स्टीरियोटाइपिंग। दूसरा इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड सोसाइटी का ही विमेन के प्रति नहीं, विमेन का अपने प्रति एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं यहाँ वाइस चांसलर थी विमेन यूनिवर्सिटी में, लकीली दैट वाज अ विमेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक बार एक वाइस चांसलर्स का डेलीगेशन आया यूएसए से, एंड देन दे टोल्ड मी कि यूएसए में, इमेजिन, मतलब आपको हैरानी होगी सुन के, यूएसए डेवलप्ड देश है, हमारा तो डेवलपिंग देश है, यूएसए जैसे देश में विमेन वाइस चांसलर्स की सैलरी मेल वाइस चांसलर से कम होती है। तो आई वॉज शॉक्ड, आई सेड कि ऐसा कैसे, हमारे देश में तो विमेन वाइस चांसलर, मेल वाइस चांसलर सबकी सेम सैलरी होती है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि विमेन वाइस चांसलर की सैलरी मेल वाइस चांसलर से कम होगी, यूएसए से जैसे देश में ऐसा कैसे हो सकता है। तो देन दे टोल्ड अस कि हमारे देश में सैलरी फिक्स नहीं होता है, नेगोशिएट होता है ओवर द टेबल, एंड विमेन टेंड टू नेगोशिएट लोअर। उनको लगता है शायद हम इतनी सैलरी के लायक नहीं है, मेल्स शायद ज़्यादा सैलरी के लायक है, हम इतनी सैलरी के लायक नहीं है। अदरवाइज भी आप देखेंगे बहुत सारी जगह फिल्मों में हीरोइंस देख लो, हीरोइन को कम मिलता है रेम्यूनरेशन, हीरो को ज़्यादा मिलता है, क्यों? तो जो ये एटीट्यूड हमारा खुद के प्रति है ना कि यस हम शायद उतने के लायक नहीं है, तो हमें ये एटीट्यूड बदलना चाहिए। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है बदलना। आप किसी हाउसवाइफ से पूछिए कि आप क्या करती हैं फील्ड से, कुछ नहीं। पहले उस यूनिवर्सिटी में मैं थी तो एक बारी बहुत सारी, क्योंकि रूरल वीमेन यूनिवर्सिटी तो रूरल वीमेन यूज टू कम टू मी, तो आई उनसे पूछा कि आप करती क्या हैं? इसे हम तो कुछ नहीं करते। मैंने कहा कुछ नहीं करते मतलब? इसे वो मतलब महिलाएं कहती हैं कि हम कुछ करते ही नहीं। तो मैंने कहा तुम घर की देखभाल करती हो बच्चों की? कहते हैं हाँ। मैंने कहा खेतों को भी देखती हो, घर का मैनेजमेंट भी करती हो, पति को भी देखती हो, सब कुछ देखती हो, और फिर कहती हो कुछ नहीं करते क्योंकि ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते तो इसलिए कुछ नहीं करते। तो ये जो एटीट्यूड है ना खुद का कि हम कुछ नहीं करते, तो इसी एटीट्यूड को चेंज किया एक लेडी ने। इट्स स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक जैसे एक लाइन लगा हुआ था, क्यू लगा हुआ था लाइसेंस बनाने के लिए, तो पहली वाली लेडी लाइसेंस के लिए आई तो उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन? उसने कहा कि आई एम ए हाउस वाइफ। तो जो लाइसेंस बनाने वाले ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया, उसका एप्लीकेशन रखा, छोड़ा। नेक्स्ट आई, शी वॉज ऑल्सो ए हाउस वाइफ, तो उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन? शी सेज आई एम ए रिसर्चर। उसका थोड़ा इंटरेस्ट आया कि यू आर ए रिसर्चर, तो उसने कहा व्हाट डू यू रिसर्च ऑन? शी सेज फैमिली डेवलपमेंट एंड होम मैनेजमेंट। शी सेज वेरी गुड, एंड कैसा मतलब डू यू हैव सम प्रोजेक्ट्स विद यू? शी सेज यस, उसके 2 बच्चे थे। शी सेज यस, आई हैव 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स विद मी। एंड शी सेड ओके, एंड देन यू डू यू हैव सम स्टाफ? She says yes, I have 1 research assistant with me, her husband. So, and then ultimately she asked, is your research part-time or full-time? She says my research is overtime. और उसको इतनी इज्जत से बाहर छोड़ के आई कि हाँ कितना बड़ा काम कर रही है। तो इट इज़ ओनली द पर्सपेक्टिव कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है अपने काम के प्रति। तो अगर हम अपने काम के प्रति अपना पर्सपेक्टिव अच्छा रखेंगे तो मुझे नहीं लगता ये रिजर्वेशन वगैरह की जो बात है, मुझे हमने एक उस रूरल विमेन यूनिवर्सिटी में एक विमेन यूथ पार्लियामेंट किया जिसमें हमने पूछा कि रिजर्वेशन चाहिए जॉब्स में, रिजर्वेशन चाहिए एडमिशन में विमेन को। उन्होंने कहा हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। रूरल विमेन यूनिवर्सिटीज़ वो ये कह रही है कि हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए। The day we get equal opportunity, these men will be running for reservations. We don't need any reservations. That is the attitude. So if that attitude is there, so I'm sure कि पक्का 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 लड़कियां आगे जाएंगी। And third, पहला मैंने stereotyping बोला, दूसरा attitude. Third is glass ceiling. ग्लास सीलिंग का मतलब है कि जो मैं कह रही थी कि वाइस चांसलर ओनली 5% है, वो इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि लड़कियां एक पर्टिकुलर इस लेवल तक तो जा सकती हैं, इसके बाद एक इनविजिबल सी ग्लास की सीलिंग है, उसको तोड़ के ऊपर जाना मुश्किल है। तो वो जो इनविजिबल ग्लास सीलिंग है उसको ही तोड़ना है, और जिसने उसको तोड़ लिया वो आगे बढ़ गया। तो वो ग्लास सीलिंग को हटाना है। अगेन दैट विल डिपेंड कि आपका एटीट्यूड क्या है अपने प्रति, अपनी काबिलियत के प्रति। काबिलियत तो हर विमेन में है ही है, उसको वो कैसे पहचानती है और कैसे उस पर आगे बढ़ती है वही इंपॉर्टेंट है। तो स्टीरियोटाइपिंग को दूर भगाओ, एटीट्यूड को पॉजिटिव करो और ग्लास सीलिंग को तोड़ो। ये तीनों अगर कर लिए तो कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और विमेन के लिए मैं लास्ट में अगेन एक हिंदी में 2 लाइनें हैं बहुत बढ़िया कि विमेन एंड मेन में फ़र्क क्या है। तो कहते हैं कि विमेन मतलब 2 कैटेगरीज में है समाज। तो कहते हैं कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए,
ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जैसे जैसे वक्त बदलता है वो बदलते रहते हैं। तो कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और विमेन में क्या कैपेबिलिटी है वो दूसरी कैटेगरी है, वो है कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो आप लोगों को सांचे बदलने हैं और आप में वो कैपेसिटी है कि आप सांचे बदल सकती हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द women present here, and my compliments to all the women achievers who have received the awards today. Thank you very much. Thanks for inviting me here. Thank you. Thank you, madam. You made a very strong appeal out there and very rightly talked about the stereotypes that we face every now and then. It's also about the glass ceiling, very rightly you said, and ultimately, the bottom line is that unless and until you have the attitude, you cannot make it. So whether you want to make it or want to break it, but please have the right attitude because that helps you to go where you want to. With this, I once again thank the chief guest, Dr. Pankaj Mittal, for being here with us. And now I would like to call upon Professor Shivani Gupta. Can I have Professor Shivani Gupta on stage, please, to introduce Ms. Anshu Tyagi, who is Lokpal, Meerut. थैंक यू मैम, मुझे यह सौभाग्य देने के लिए। स्त्री को शिल्पकार कहा जाता है क्योंकि स्त्री इंसान की रचना करती है और उसे तराश कर शुद्ध तथा गुणी बनाती है, और एक अच्छा इंसान एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। ऐसी एक शिल्पकार हैं हमारी अगली विदुषी सम्मान की पात्र मेरठ मंडल की लोकपाल अंशु त्यागी मैडम। अगर किसी राष्ट्र को उन्नत और सफल बनाना है तो उस राष्ट्र से भ्रष्टाचार को जड़ से हटाना होगा, और ये महत्वपूर्ण और कठिन संकल्प मेरठ मंडल की लोकपाल अंशु त्यागी जी ने लिया है। आपने मेरठ मंडल की लोकपाल का कार्यभार संभालते ही मेरठ मंडल को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए ग्राम्य विकास योजना के रिकॉर्ड, मेजरमेंट ऑफ वर्क और सोशल ऑडिट कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि आपका मानना है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज तभी बन सकता है जब गरीबों और श्रमिकों को उनके कार्य का पूर्ण भुगतान मिले और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। साथ ही साथ उच्च पद पर आसीन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने कर्तव्यों को समझते हुए उसके साथ पूर्ण न्याय करना होगा। अंशु मैडम, मैं आपका अपने सुभारती विश्वविद्यालय के प्रांगण में अभिनंदन करती हूँ और आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं अपने कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आर के घई सर से निवेदन करती हूँ कि मैम का मंच पर अनुरक्षण करें। साथ ही साथ मैं अपनी मान्य कुलाधिपति, कुलपति और सीईओ मैडम से आग्रह करती हूँ कि मंच पर आकर अंशु मैम को विदुषी सम्मान से सम्मानित करें। अब मैं मान्य कुलाधिपति और सीईओ मैडम से निवेदन करती हूं कि मैडम को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित करें। इसी कड़ी में मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करूंगी कि मैडम को उद्धरण चिन्ह देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अंशु मैम, आपसे निवेदन है कि आप अपने बहुमूल्य शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। Good afternoon, all. Thank you so much, first of all, for inviting me here as a guest of honor.
और मैं इसमें थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगी अपने बारे में। जो तो मेरे बारे में जो भी मैम ने बोला, उसके साथ साथ मैं एक काम और भी करती हूँ। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनकी मैं जांच करती हूँ, उनके खिलाफ एफआईआर और रिकवरी ज़रूर करती हूँ। इफ़ आई फाइंड देयर इज़ अ करप्शन, अगर मेरे को करप्शन मिल गया ऑन द ग्राउंड, तो आई डोंट स्पेयर एनीवन, वेदर आई रिसीव ए कॉल फ्रॉम द एमपी, एमएलए, एमएलसीज, एनीवन। अभी तक बहुत सारी एफआईआर्स की हैं मैंने यहाँ मेरठ मंडल में, क्योंकि आई एम हैविंग 6 डिस्ट्रिक्ट्स विद मी, दैट इज मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर. I sit in each district one day and I hear the matters then and there of the public. I take the complaints from the public directly regarding the corruption. सो मैं अपना एक एग्जाम्पल आप सबको देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है मैं यहाँ तक पहुँचने में। मेरे फादर बहुत पहले मुझे छोड़ के चले गए थे और मैं उस वक्त कॉलेज में थी। तो फिर मेरे पास कोई नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, नहीं पता था कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, क्योंकि आई वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ माई फैमिली। 2 सिस्टर्स की मैरिज करने के बाद स्ट्रगल साथ साथ की, खुद पढ़ाई की, कॉलेज पूरा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस लंदन ज्वाइन किया, साथ साथ जो है जुडिशरी की तैयारी की। देन आई गॉट selected and I became the judicial officer in Delhi. Then I have been called by the government of UP. I'm representing the government of UP as a Lokpal of Meerut division. So this is what I want कि जब मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ तो हर फीमेल कर सकती है वो। Without father, without any support, I stood at my own. जो भी मैं हूँ आज अपने उस पे हूँ, अपनी कैपेबिलिटी पे हूँ। तो हर लड़की के अंदर कैपेबिलिटी है, सिर्फ उसको पहचानना है कि वो कहाँ स्टैंड करती है। और अगर मैरिजेबल एज है और पेरेंट अगर मैरिजेबल में हस्बैंड है या जो वुड भी होने वाले हैं, उनसे भी कह के चलिए कि नहीं, हम जाके घर पर काम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं हम आपके साथ मिलके काम करें। तो दैट आई वांट कि सब लोग जो है इस तरह से वर्कआउट करें और आगे बढ़ें, सारी फीमेल्स बढ़ें, जस्ट लाइक एवरीवन। एंड आई एम वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड सारे रिस्पेक्टिव जितने भी यहाँ गेस्ट हैं और सबने मुझे बहुत ज़्यादा what to say. Thank you so much. Thank you, ma'am, for sharing all the struggles that you faced and all the achievements that you have secured by the dint of your determination and merit. We appreciate. I would now like to have Professor Rakhi Kumari on stage, please, to introduce Dr. Renu Bhagat, who is President IMA Meerut. क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में। तो हमारे बीच एक ऐसी ही हस्ती हैं जो लोगों की धड़कन वापस लाती हैं। And it's an honor for me to welcome and to introduce Dr. Renu Bhagat. She is President of Indian Medical Association, Meerut branch. Dr. Renu Bhagat is elected as first female IMA President of Meerut branch in 2021 after a gap of 30 years. Recently, another feather added in her cap as she has been nominated as executive member of Women Doctors Wing at national level. She received Nari Shakti Samman in March 2017 from Commissioner Meerut. She was awarded as Best Secretary of all branches in IMA UP state in 2017. She was awarded Professional Excellence Award by Amar Ujala in 2021. She is Chairperson of Mission Pink Health Meerut, which works towards adolescent health. She got National Award for Best Project of Safe Motherhood at National Conference Patna in December 2021. Now I request our convener, Dr. R.K. Ghai, to escort our guest of honor, Dr. Renu Bhagat, to stage. And I request our Chancellor Madam, Vice-Chancellor Sir, and CEO Madam to kindly escort her, our guest, to the stage, please. Please, ma'am, please come to the stage. I request our Pro-VC sir as well to kindly come to the stage with our guest. And it's really a very privilege for us that we have Dr. Renu Bhagat with us today to grace this occasion. Thank you so much, ma'am, for coming here.
Honorable Chancellor Madam to honor her by draping the Angvastram. Thank you so much, ma'am. I request our Honorable Vice-Chancellor, sir, to present the citation. Thank you so much, sir. I now request Dr. Renu, ma'am, to address the gathering with few words. Please, ma'am. सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम और मिस राखी, थैंक यू. Thank you, Subharti Vivekananda University, to honor me on this auspicious day. हॉल में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, सभी सम्मानित अतिथिगण को भी मैं शुभकामनाएं और अभिनंदन प्रेषित करती हूँ. मैं डॉक्टर रेनू भगत, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरठ में प्रैक्टिस करती हूँ. आज जब मैं अपने कुछ कहने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले जो मेरा मन किया है वो ये है कि मैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैम को श्रद्धांजलि अर्पित करूं, जिनकी अथक प्रयासों से जो आज मुझे दिखाई दे रहा है ये ऑडिटोरियम या सुभारती यूनिवर्सिटी, उसने इतना सुंदर आकार लिया है. सुभारती यूनिवर्सिटी के बाकी सभी लोगों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं कि इतना ऑस्पिशियस डे पर इतना एक सम्मान समारोह उन लोगों के लिए करना जिन्होंने वाकई में समाज के लिए कुछ किया है. जब मेरे से कुछ कहा गया कि आप कुछ बताएं, तो मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ काफ़ी युवाजन बैठे हैं, खास करके गर्ल्स, लड़कियाँ. तो और डॉक्टर हूँ और एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो उनको ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी. कहा जाता है कि स्वस्थ अगर सशक्त नारी होगी तो सशक्त समाज होगा. सशक्त नारी वही होगी जो कि स्वस्थ होगी, और स्वस्थता का ध्यान रखना है, अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो वह स्टार्टिंग से ही होना चाहिए. तो जो सबसे ज़्यादा इस समय पर प्रिवेल्ड है इंडिया की, जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, मैं दो बातों के बारे में जिक्र करना चाहूँगी. एक तो एनीमिया है और एक कैंसर. कैंसर में यूट्रस की मुंह का सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 15 से 30% ऑफ ऑल कैंसर्स में प्रिवेल्ड है, और ये दोनों प्रिवेंटेबल हैं और यंग एज से स्टार्ट करने चाहिए. तो मेरा आज यहाँ एक मैसेज है कि जो भी 15 साल से ऊपर की गर्ल्स हैं वो अपना HPV वैक्सीनेशन जरूर कराएं, उससे वो सर्वाइकल कैंसर से बचते हैं. जो लड़कियाँ इससे बड़ी हो गई हैं लेकिन अभी मैरिज नहीं हुई है, वो भी करा सकती हैं. और दूसरा, जितनी भी फीमेल्स यहाँ हैं वे सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपनी स्क्रीनिंग जरूर कराएं. स्क्रीनिंग कराने में ब्रेस्ट कैंसर में केवल दो चीज़ें हैं, मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, जिसमें कुछ समय नहीं लगता, साथ साथ रिपोर्ट आ जाती है. यूट्रस की मुंह सर्वाइकल कैंसर में पेप्समियर, LBC स्क्रीनिंग में कुछ समय नहीं लगता, बहुत कम पैसों में हो जाता है, उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है. ये दोनों चीज़ें बहुत कुछ बचाती हैं. मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. 2016-17 में मैं यहाँ IMA की सेक्रेटरी रही हूँ, और तब मैंने अपने विजन में एक लिया था कि सबसे ज़्यादा रिलक्टेंट जो मुझे दिखाई देता था वो फीमेल डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की वाइफ्स अपनी हेल्थ के प्रति, हेल्थ प्रोवाइडर्स अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं रखते हैं. तो उस समय मैंने अपना एक लिया था कि विजन में कि इन लोगों का स्क्रीनिंग कराई जाए. तो मैक्स के सहयोग से मैंने 150 लेडीज़ को पेप्समियर, मेमोग्राफी और बोन स्कैन के लिए मोटिवेट किया और खुद गई और करवाया. और आप विश्वास नहीं करेंगे, 150 लोगों में से, 150 फीमेल में से 3 विमेन ऐसी निकली जिनमें स्टार्टिंग थी ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की, और आज तीनों सर्जरी के बाद में बिल्कुल सुरक्षित हैं. तो ये स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा लाभ है. केवल 150 लोगों में जिनमें कोई सिम्टम नहीं थे, जो कि बहुत अच्छे से अवेयर थे, उनमें भी 3 ऐसे निकले. तो और ये मेरे को ऐसा लगता है कि साल, 2 साल में, 3 साल में आप अपने एक डॉक्टर के पास जाएं और अपनी स्क्रीनिंग एक दिन में करा के और वापस आ जाएं. तो कहीं इस चीज़ का हम आगे जो ये इसका प्रॉब्लम क्या है कि स्लो ग्रोइंग कैंसर्स हैं,
स्लो ग्रोइंग होने के कारण डायग्नोसिस देर से होता है। अगर स्क्रीनिंग कराते रहेंगे, साल 2 साल 3 साल में अपने डॉक्टर से मिलते रहेंगे, तो सब तो अपना सचेत रहें, किसी खास दिन को बना लें, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, इसी वुमेन डे को ही बना लें और उस दिन अपने डॉक्टर से जरूर मिल लें, तो आपके प्रयास सार्थक होंगे। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ तो उनकी मुझे 2 लाइन याद आती हैं। उन्होंने ये कहा था, जब तक समाज में स्त्री स्वस्थ नहीं होगी या सामाजिक रूप से उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो चिड़िया भी 2 पंखों से उड़ती है, चिड़िया को भी एक पंख से नहीं उड़ना आता। तो आप अपने सेहत का ध्यान रखें, साथ साथ बाकी कुछ तो सब कह ही रहे हैं। सब सम्मान के लिए बहुत सारा हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Thank you very much, madam. And now it's time for one performance by our students. It's a group Kathak dance. जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है और नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। इस अवसर पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक शैली, जो उत्तर भारत में पली बड़ी और अपने नाम का डंका किसी प्रांत ही नहीं देश विदेशों में भी मचाया, इसी कथक नृत्य शैली को सहेजने एवं शैक्षणिक संस्थान में भी इसका उत्थान हो का जिम्मा सुभारती विश्वविद्यालय की संगमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैम ने लिया, जो आज भी उनके आशीष से विश्वविद्यालय में फल फूल रहा है। एक विशाल महिला सशक्तिकरण का उदाहरण रही हैं संगमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैम, और इसी महिला सशक्तिकरण दिवस पर देवी स्वरूपा महिलाएं जो स्वयं में सशक्त एवं सुदृढ़ हैं और इन्हीं सुदृढ़ संकल्पों को कथक नृत्य में 3 ताल में निबद्ध उठान, दुर्गा स्तुति, दुर्गा परन एवं पारंपरिक तोड़े व टुकड़े और अंत में तबले की जुगलबंदी, आप सभी के समक्ष एक अत्यंत सुंदर व मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति देने आ रही हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग की छात्राएं रिया, श्रेया, सृष्टि, धानी। उनके साथ हैं हारमोनियम संगत पर महराज खां साहब, तबले पर अभिषेक कुमार मिश्रा, सितार पर निशी चौहान, पड़ंत पर डॉक्टर भावना ग्रोवर और परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग की गायन की छात्राएं आलिया खान व आलिमा खान।
गण धा थे धा थे धा थे धा थे तक थे आ थे आ थे आ थे आ थे तक थे थे तक तक थे 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण थे ता थे तत थे ता थे तत थे आ थे तत थे आ थे तत थे 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 तत तत थे थे तत तत थे थे तत तत धाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण दाग तेरे कति कति गण दाग तेरे कति गण धाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण देता देता धाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 दाग तेरे कति कति गण थे तिरन थे तत थे थे ता थे ता थे ता थे तत थे आ थे तत थे 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 तत थे तो नी चा पा छे सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 साठ धाग तेरे कति कति गण धा 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 ता धा 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 धाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 धाग तेरे कति कति गण धा धा ता धा 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 धाग तेरे कति कति गण ताते ता आते ता ताते ता आते ता ताते ता आते ता धा रे धा ताते ता आते ता ताते ता आते ता ताते ता आते ता धा रे धा ताते ता आते ता ताते ता आते ता ताते ता आते ता धा रे धा ताते ता आते ता ताते ता आते ता ताते ता आते ता धा रे धा 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 ता धा ता धा ता धा ता धा
what to say? I'm speechless. This mesmerizing performance, Dr. Bhavna Grover, very well done, very well executed, so beautifully performed on stage. Like they say that the dancers come and go in the twinkling of an eye, but the dance lives on. And I'm sure that this performance is going to live on forever. I'm very glad to say that we have amongst us now Miss Anamika Jain Amber, who is an international poet. And I would like to request Chancellor Madam and Vice-Chancellor Sir and our Pro-Vice-Chancellor Sir to please offer sapling to the poet. We are so very glad to have you, ma'am, here with us. Lovely to see you. An international poet, Mrs. Anamika Jain Amber, and a sapling for you, ma'am. We welcome you. Thank you. Thank you. Hope this sapling grows and flowers as your talent does. And now I would like to call Professor Sarika Abhay on stage, please, to introduce us to Dr. Poonam Devdutt, who is President MMA Meerut. Thank you, ma'am. Dr. Poonam Devdutt is a psychologist with an experience of more than 31 years in teaching of psychology and human resource management. She is currently serving as a director of Center for Psychology and Human Behavior and Center for Yoga and Research. In addition to teaching, she is an organizational trainer, motivational speaker, counselor, and life coach, media personality, and columnist and Reiki master. She has conducted advanced training programs for the Punjab Police Academy, Philor, Border Security Force Academy, Tekanpur, Airport Authority of India, and Indian Medical Association. In addition to the extensive work with the armed forces, she has conducted training programs for executives of leading industries, organizations, and banks. Her work with frontline schools of the country focuses on psychological training and career counseling of students, teacher enrichment workshops, and orientation programs for the parents. I request our convener, sir, R.K. Ghai, sir, to escort ma'am to the stage. I also request our Chancellor, ma'am, our Vice-Chancellor, sir, and CEO, ma'am, to join on the stage for felicitation to Dr. Poonam Devdutt. We are free. So I wish you all the very best. I thank Subharti University once again for organizing such a wonderful program. And I'm sure if Dr. Mukti Bhatnagar had been here, she would have added so much more life to this program. We all miss her, but we remember her for the tremendous, tremendous work that she has done in building this wonderful institution. So thank you very much, and I wish you all the very best. Jai Hind. Thank you, madam, for giving us the reasons as to why, psychologically speaking, what are the inner workings and how we adopt and adapt to the situations and the circumstances that go completely against us. It is all about internalizing the facts and internalizing the concepts that we live on. It's time to do some unlearning. With this, I would like to now request and call upon stage Professor Sarika Abhay once again to introduce us with the Dr. Sister Christina, who is Principal St. Joseph's Girls Degree College, Sardhana. Can I have Professor Sarika Abhay on stage, please? चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे अंधियारा घना और लहू से सना
जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आई मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। मैडम ये एड्रेस कहाँ का है? ये एड्रेस जाने दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, जाने दो। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है री। रख दिए गए पत्थर, है खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, है खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत जल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रीत जल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात मौत की बिछी बिसात, उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 रक्त चरित, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। Oh, that was a power-packed performance. I have goosebumps.
and very strong message that you get to hear day in, day out. They get to read in the newspapers day in, day out, and the response and the reaction to that. So very well executed. I congratulate you, management school students. Defined by no man, you are your own story, blazing through the world, turning history into her story. And when they dare to tell you about all the things you cannot be, you smile and tell them, I'm both war and woman, and you cannot stop me. Now, this is the message which has been conveyed through this performance, ladies and gentlemen. And now to continue with the sterling performances of our students, I would like to call upon stage group singing on Women by Bhutani students, Law College. Mama, she loved us all. She will never leave us all, and she never fail us all. Mama, you are not alone. I hope I'll be with you through it all. Mama, मैं कभी बदलाता नहीं, अंधेरों से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, मेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाता है माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही आगे माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता है न माँ। मम्मा मेरी माँ, मम्मा मेरी माँ, मम्मा मेरी माँ, मम्मा। You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in the crowded place, and I don't know what to do. And we always win with you. Mama, मेरी माँ,
हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस। डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है। कितने मंथ की प्रेग्नेंट है? 4 महीने हो गया मैडम। अच्छा, ओके। समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, कैसे आपको बताएं आप, क्योंकि आप माइंड मत करना, पता तो चल जाता है, हमारी वाइफ को भी पता चल गया था। लड़की है। अच्छा। अबॉर्शन करना था। इज देयर कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप अबॉर्शन करा दे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। डॉक्टर, आपको मालूम है कि इंसान की फिक्र ये हुआ करती थी जब उसकी लड़की होती थी कि जब जवान हो जाएगी तो क्या होगा। डॉक्टर, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता, ये स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। और हिंदू मुस्लिम, आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं, उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ, इतनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर इसने मुझे हरा दिया इस चीज में, आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। लड़कियों को जन्म लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है, समाज में जीने के लिए भी लड़ना पड़ता है। मुझे तो शर्म आती है कि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां औरतों को इतना नीचा देखा जाता है। तो मैं राशि यादव अपने कुछ शब्दों को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप उस कविता को ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। यूं तो मैं एक बेटी हूँ, दिल मेरा घबराता है, ना जाने मेरा जन्म लेते ही सबका मुंह क्यों बन जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे देखते ही मेरे पापा का चेहरा खिल जाता है, मेरी माँ को सुकून आता है, दादी माँ को मुझ पर बहुत प्यार आता है, दादा तो मेरा खुशी से नाच जाता है। फिर भी मेरा जन्म लेते ही सबका मुंह क्यों बन जाता है। यूँ तो मैं एक बेटी हूँ, लेकिन दिल मेरा घबराता है। मेरा तो अच्छा मेरे माँ पापा करेंगे, मुझे पता है वो ही मेरे साथ खड़े होंगे। रही बात मेरी शादी की, वो तो सब दादू पापा मिलकर करेंगे, तो चिंता मत करो, मेरे सारे काम भगवान करेंगे। यूँ तो मैं एक बेटी हूँ, लेकिन दिल मेरा घबराता है, ना जाने मेरा जन्म लेते ही सबका मुंह क्यों बन जाता है। एक बात बताऊँ, मुझे तो ये बात सताती है, हर घर बेटी जरूर आती है, फिर भी 2 दिन की बच्ची बिना कपड़ों के नदी में पाई जाती है। कितना राक्षस होगा वो जिसने ये नीच हरकत मचाई होगी। मुझे नहीं पता उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी। क्या उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई होगी? उस बच्ची का चेहरा देखकर को प्यार करने की इच्छा नहीं आई होगी? उस बच्ची को भी उस दिन अपनी माँ के लिए गंदी सोच आई होगी। उसको ये नहीं पता था उसके होते ही उसको ये सज़ा मिल जाएगी। यूँ तो मैं एक बेटी हूँ, लेकिन दिल मेरा घबराता है। एक बात और बताऊँ, बेटी तो अपना नसीब खुद लिख कर लाई होगी। यूँ तो मैं एक बेटी हूँ,
लेकिन दिल मेरा घबराता है, ना जाने मेरा जन्म लेते ही सबका मुँह क्यों बन जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगी, औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। जय हिंद, जय भारत। जेंडर इक्वालिटी, राइट टू वोट है, राइट टू दिस, ऑल इक्वल पे वगैरह वगैरह। सम लॉट ऑफ स्पीकर्स टच्ड अपॉन द इनइक्वालिटीज इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो औरतें अपना सही वर्थ समझें, क्योंकि we own half the sky, we own half the world, and therefore we must exert our right. लड़ाई झगड़ा नहीं करके, वो थी ना पिछली बार वो जो रिवॉल्वर दादी, कि उन्होंने कहा झगड़ा मत करो, घूंघट काढ़े रहो, लेकिन अपना काम जरूर कर लो। हमें उनकी वो प्रैक्टिकल एडवाइस बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हो सकता है कि उनका काम हो जाता हो बगल में जो रिवॉल्वर बांधे हुए थी, मगर इट इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव टू understand. दूसरी चीज़ I would like to emphasize, which I emphasize in every meet that when I talk to women, help other women. कोई फर्क नहीं है एक दूसरे में, हम लोग सब एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं. We are reflections of each other. There should not be competition, there should be networking. And this is where women get into a trap. They do not network. We bond, we can understand each other's problems, but when it comes to helping another woman achieve her objectives, we don't help. We should reach out and help. अगर दो दुकानदार आपको दिखे, एक औरत है एक आदमी, तो औरत से खरीदिए. This will help her economically, because this money will be used more wisely. It will not be spent on booze, it will not be spent on idhar udhar, it will be spent on her family, and it will be an investment towards a child's future. मैं यहाँ पे बहुत टाइम नहीं लूँगी, केवल मैं इस मौके पे I would like to salute all those women जिन्होंने ये पैंडेमिक के टाइम में बड़ा एक हॉरिबल सा टाइम था, जिसमें सब everybody had to face it very courageously and सबसे ज़्यादा वेमेन, क्योंकि उनको घर चलाना था. इकोनॉमिक डाउनटर्न है, अभी भी बहुत सारे फैमिलीज़ इस इकोनॉमिक डाउनटर्न से जूझ रहे हैं, बिकॉज बहुतों की नौकरी चली गई, बहुत को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हुई. फिर भी घर का चूल्हा तो जलना ही है, घर का काम होना ही है. तो आई वुड लाइक टू सल्यूट ऑल द women who went out of their way to help other people. चाहे वो घर की बाई हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर हो, who kept to their work, बहुत, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो. मेरे पास तो पेंडेमिक के टाइम में इतनी कॉल्स आती थी कि कहीं हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, मुझे सुभारती भेज दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, मुझे वो कर दीजिए. एंड आई वुड से वेरी प्राउडली कि हाँ आप जाइए, आपकी देख रेख होगी. एंड गॉड इज़ सो काइंड कि अपार्ट फ्रॉम माई सिस्टर, आई वुड से एवरी पेशेंट दैट वॉज हियर केम आउट हेल एंड हार्टी. बहुत सीरियस केसेस भी मैंने भेजे, और ये कह के भेजे कि देखो पता नहीं बचेगा कि नहीं, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है. लेकिन कितने सारे यहाँ सफाई कर्मचारी लगे हुए थे जो हॉस्पिटल की सफाई करते रहे होंगे, कोविड के वायरस को झेल रहे थे, बीमार भी पड़े, फिर भी वापस आ गए. केयर प्रोवाइडर्स और केयर प्रोवाइडर्स हैं, टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे थे, आउट ऑफ द वे जाकर अपनी फैमिली और उसको नहीं देख के, नर्सेस, डॉक्टर्स. हर बार पेशेंट आता था तो मुझे लगता था हमारी बहू भी वहाँ काम कर रही है, उसको तो नहीं हो जाएगा कोविड, मेरा बेटा भी काम कर रहा है, उसको तो नहीं हो जाएगा. इतना डर लगा रहता था. फिर भी ये था कि इट हैज़ टू बी डन. और जर्नलिस्ट थे, अभी भी जर्नलिस्ट हैं. देखो यूक्रेन में कितनी लड़ाई, घमासान लड़ाई के बीच में खड़े हुए हैं, बता रहे हैं वर्ल्ड को क्या क्या हो रहा है. अगर नहीं होते, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि माइग्रेंट्स हैं, लोग जा रहे हैं कोविड के दौरान, या क्या हो रहा है आउटसाइड. पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी वाले थे, कितने मर गए.
कोविड को वो करके कितनी औरतें अपना घर छोड़ करके आई, वहाँ ड्यूटी पे आई। एक औरतों की ज़िंदगी में हरदम ये रहता है, एक वर्क लाइफ बैलेंस। मैं घर को देखूं, मैं बाहर को देखूं, एक टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ती है कि सब चीज़ बैलेंस में रहे। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ क्राइसिस। तो यहाँ मैं समाप्त करूँगी। आई वुड लाइक टू सल्यूट all the women workers of Subharti, all students of Subharti. I would wish all of you a happy Women's Day, and let us go forward together. And of course, all the men of Subharti also, because they have to be there. The other half of the world belongs to them. Happy Women's Day. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये अंडरलाइन करने के लिए एक बार फिर कि स्त्रीवादी सोच ही नहीं, मानवतावादी सोच की कहीं ज़्यादा आवश्यकता है समाज को एक बेहतर और उन्नत समाज बनाने के लिए। And now it's time for vote of thanks. Call me queen like it's my name. I won't forget to take my claim. I don't care what they say. Being a woman can look this way. And you can very well guess who I am going to call upon stage now, none other than the CEO, the Chief Executive Officer of Swami Vivekananda Subharti University, Dr. Shalya Raj is going to come up on stage for the vote of thanks. A very charismatic, out-of-the-box thinker. Please, ma'am. Jai Hind, Honorable Chancellor ma'am, Vice-Chancellor sir, Pro-Vice-Chancellor, all deans, dear faculty members, and my dear students, and media, and everybody else. On the occasion of the eve of International Women's Day, with the theme of gender equality, I would like to congratulate all women who have risen above the clutches of judgment, biasness, and achieved various accomplishments in their lives. Now, I had written much more, but मैं जानती हूँ हम बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं और मैं अपने सब कुछ जो मैंने लिखा है मैं नहीं बोलूँगी. So I will just point out my speech in bullets and say the vote of thanks, which is the most difficult part of any program because pointedly किसी को भी thank करना बहुत मुश्किल है. Any program which is successful is always because of the team effort. So I will start by thanking first the Almighty, because I'm very, very proud that I'm a woman and there is a full day to celebrate my womanhood, and all of yours. So a very, very happy International Women's Day to all of you, and be happy that you were born and you were blessed by God that you are a woman. To all the awardees, I am very, very thankful. I will not be taking names of any of them because unfortunately they've all had prior appointments and they've all left. But we are very grateful that they all gave us time. They all took out time from their busy schedules and they were here. They gave us very, very inspiring speeches to all our students, to all of us. And they've given us different platforms to look up to and to become much more analyzed, especially to our students. ये हमें realize करना चाहिए कि हमने हर woman ने अपनी life में बहुत कुछ accomplish किया है और आप सब भी वो सब accomplish कर सकते हैं. आप सबको अपना नाम बनाना है, आप यहाँ पे अपना career बनाने आए हैं और आगे चल के आप अपनी अपनी fields में कुछ ऐसा नाम करिएगा जो आप अपना, अपने पेरेंट्स का और सुभारती यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सकें. On behalf of Honorable Vice-Chancellor and Subharti family, I have already thanked everybody, so I will not look at this paper again. And now coming to thanking our Honorable Chancellor, who's an inspiration. We always keep boasting about that we have a woman Chancellor. But ma'am, we love you from all our heart. Your each word has been an inspiration and we always boast about you everywhere where we go. So thank you for being here. Thank you for all the love that you shower on us always. And it's lovely to always have you. And just so that
एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, देखिए वैसे मुझे सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स बोलना था, बट क्योंकि मैं स्टेज पे हूँ तो मैं आपको 3-4 अपने पॉइंट्स भी दूंगी, क्योंकि मुझे और कभी स्टेज पे वुमेंस डे पे बोलने को नहीं मिला. वैसे मैं आई हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स लाइक एवरीबडी एल्स हैड, बट क्योंकि सबने इतना सारा बोला तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है. सी आई हैव जस्ट 3 थिंग्स टू से. Don't make womanhood an excuse. I get so many people saying कि मैम हम लड़की हैं, मैम हम औरत हैं, इसलिए हमें ये दे दीजिए. Please believe in the strength that you have. Don't say. I love that. I think it was the education college who said कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. That means you have a mindset that the women are weak. You don't at least make yourself and prove yourself that you're weak. Don't bear injustice and don't do injustice. Gender equality दोनों तरफ से आती है. अपने अधिकारों का मिसयूज मत करिए, क्योंकि अगर हम मिसयूज करेंगे तो जब किसी को अधिकार चाहिए होगा तो वो हमेशा एक बायस नज़र से देखा जाएगा. And lastly, that help other women. I think मैम ने भी यही कहा था and I will repeat it. Help other women. If you have achieved something in your life, extend it so that other women can also come up and know their rights. So I think you should, as a woman, help other women. Now, I will also like to congratulate our organizing team for such a wonderful event today. Under the guidance, I will not be taking everybody's name because everybody is bored and I think they've been sitting for too long. So under the guidance of Dr. Ghai, Dr. Pintu, Dr. Bhavna, yeah, the cultural events were wonderful. My students, आज आप लोग ने धमाल मचा दिया स्टेज के ऊपर. You were wonderful, fantastic, beautiful performances. Keep it up. And the Directorate of Distance Education, आप लोगों ने आज जो हमारा प्लांटेशन है उन सब लोगों ने संग माता के नाम पे उनके प्यार में आज प्लांट्स जो हमें they just, I will not use the word donated, but they gifted the plants because they wanted कि वो plants उनके नाम पे plant हों. So that event will be happening after some time. So I would like to thank them. So in the end, I will just say, keep celebrating the womanhood and a Women's Day every day in your life. And I think one International Women's Day is not enough. Celebrate it every day. Don't bear injustice. Don't do injustice. So Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am. Very well said. All the points that you said, I mean, we are going to take a note of that. Very precious. And with this, I would like to call upon stage the students for Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Suflam, Malayaj Sheetalam, Shashamana Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Shubhe Josna Pulakite Amini, Pulkusumita Drumadal Shobhini, Suhasini, Sumadhur Bhashini, Sukhram Valadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. भारत माता की जय.